We are here with you a new Samsung Galaxy A13 on our channel, as we have promised with you a new A13 Samsung. So before unboxing, I just want to please share, like and subscribe and comment if what you think in our unboxing video. So this is 6 GB of RAM, 128 GB of space, and we are going to unbox this device. Okay, dun, dun, dun. This is Samsung A13. So this is the phone. Okay, so looking very nice. Clarity, the phone is looking very beautiful. Okay, what are the other things in this box? We have a charger of T8 watt, adaptive of fast charging. This of clearly you can see. It may be visible or not. It is here looking. It is fast charging, and it is capable of input output 240 volt. Output is input 100 to 240 volt. Output is 9 volt, and charging current is 1.6 ampere, and on 5 volt it is giving a 2 ampere of output. So it is from Samsung. ये दावा किया जा रहा है कि it is giving a fast charging. So this is the adapter, and anything else? Oh, this is the cable of charging. So this is C port cable. Samsung is giving a cable and the charger with this phone, but with few phones Samsung is not giving the charger. So mind it, and nothing else with this box. And SIM ejecting tool is missing. One more thing, SIM ejecting tool SIM ejecting tool is here. With this SIM ejecting tool is this. So we are going to looking very beautiful. What do you think? Looking very beautiful. Can we pick selfie or not? Oh wow, looking very beautiful. Color is very nice, a tangy color. So we are just removing this. And we have the phone. Just a second. Okay, so this is the phone. Very beautiful. So we are switching on this phone. Knox security is giving from Samsung. Very much beautiful. So it is switching on, and before it is switching on, we are sharing a few details with you. It is not
showing clear. So it is now switching on, and the phone is pretty much good and not very heavy, very smooth in hand. Finishing is very okay. Samsung brand. It's taking time to switch on, guys. Hold a second. It's taking too much time. Just you can see video is going some about. Let's give time. We are pausing this video so that it will we will continue this video after pausing this, when it will switch on. Now here again the phone has started, now switched on, and this phone is looking as this. So here is the fingerprint sensor. साइड सैमसंग ने इसे साइड में दिया, सो वेरी स्मूथ. बट आई जस्ट वांट टू से अ फ्यू थिंग्स दैट अगर आप ये फ़ोन ख़रीदने जा रहे हैं तो ये फ़ोन आप बिल्कुल ना ख़रीदें, क्योंकि मैंने इसे जस्ट अभी इसका कैमरा टेस्टिंग किया है और ये कैमरा टेस्टिंग में बिल्कुल भी फेल हो गया. अगर ये आप 5,000 का फ़ोन ख़रीद रहे हैं तो भी इस फ़ोन को ख़रीदने के बाद आप पछताएंगे, क्योंकि इसके कैमरा क्वालिटी बिल्कुल ख़राब है. ये देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहा है आपको, ये 1, 2, 3 and 4 कैमरास, बट इसके कैमरा क्वालिटी बिल्कुल भी बेकार है. अगर आप किसी भी चीज़ की अगर फ़ोटो आप लेते हैं इस चीज़ से, तो फ़ोटो बिल्कुल भी आपको क्लियर नहीं आएगा, बहुत वल्गर फ़ोटो आएगा आपको. मैं आपको शो करके दिखा रहा हूँ. जैसे मुझे इसका एक फ़ोटो लेना है, जस्ट अ सेकंड. गाइस देखिए, मैंने आपको लाइव करके दिखाया. ये फ़ोटो इसका बड़ा करने पे बिल्कुल भी ये क्लियर नहीं आ रहा, बिल्कुल भी फ़ोटो इसका क्लियर नहीं आ रहा. अगर आप ये फ़ोन ख़रीदने की सोच रहे हैं तो मैं इसे 16,500 पे बिल्कुल भी आपको इसे रिकमेंड नहीं करूँगा कि ये फ़ोन आप जाकर ख़रीदिए, क्योंकि सैमसंग की तरफ से ये बिल्कुल ही कैमरा क्वालिटी में ये फ़ोन बिल्कुल फेल हो चुका है. क्योंकि इसके फ्रंट जो है वो 8 मेगापिक्सल, मात्र और मात्र 8 मेगापिक्सल है, और बैक कैमरा जो है वो आपको दिया गया है क्वाड कैमरा, लेकिन वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल मुझे नहीं लगता है. ठीक, तो बेहतर इस वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और हमारे वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं आगे भी, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. जय हिंद. And I will not recommend you to buy this phone on 16,500 because it is not very much effective with camera quality. और अगर आप कैमरा के पर्पज़ से इसे नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप बेशक इसे ख़रीद सकते हैं, लेकिन अगर आप कैमरा के पर्पज़ से इसे खरीदना चाहते हैं तो मैं इसे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस फ़ोन को जाकर के परचेज़ करें 16,500 पे. ये बिल्कुल भी आपका पैसा वेस्ट, आपको लगेगा कि आपने जो पैसा जो है कि वेस्ट कर दिया, बेकार कर दिया. सो इसके मैंने पिक्चर क्वालिटी भी टेस्ट की थी और इसके बाद मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ. तो होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा चीज़ जो है कि इसमें मिसिंग लगा, उसको हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि उसको हम सही कर पाएँ. थैंक यू गाइस.